false alarm. I'm sorry. जो ये भी स्ट्रीमिंग में जाकर यूआरएल देखो सर एक बार टेस्ट करें टेस्ट Hello, check. ओके सर हाँ ठीक मेरी चीज फोकस क्या है हाँ यही है ठीक है ना पोस्ट वीडियो देख पाएगा ठीक है ना पार्टिसिपेंट विल ओनली बी एबल टू सी पोस्ट वीडियो हाँ ठीक है पोस्ट करके एक बार मतलब जो हम ये पोस्ट कर रहे हैं हम ये वीडियो देख पाएगा आप क्या है ओके मैडम मेरी आवाज नहीं आ रहा अभी हमने म्यूट कर रखा है प्रोग्राम शुरू तो आवाज जाएगा ये लाइव आ गया चेक साउंड चेक करना
आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा 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 शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शुभं The open honor to achieve our yourself, to live out for God, and above all, to live courageously. Just like Dr. Kiran Bedi, delighted to have you here now. May I request Vice Chancellor Dr. Ram Singh to present the welcome note. Good morning, you all. Finally, Dr. Kiran Bedi is with us. So, this gives me immense pleasure giving welcome address on late Sri NJY Memorial Talk Series. I, on behalf of IPS family and IPS University Dehradun, express our deep sense of gratitude to our honorable chief guest, Dr. Kiran Bedi, for taking out time from her extremely busy schedule to speak on the topic fearless governance. I also take this opportunity to brief our honorable chief guest about IPS group, which was established in year 1984 as a non-for-profit society with broad objective empowering citizens through world-class education. Its founder, Sri NJY, was a great institutional builder, visionary, and genius, who was years ahead of his time. It has a pan-Indian network presence with 11 university campus and 9 business schools located in various states of India. The Management Case Research Center of IPS Business School has become a center of excellence and has won several awards globally. This, a research case study is to be prepared in IPS University Dehradun, the IPS Business School, on the life of Dr. Kiran Bedi on the topic fearless governance, which may be used globally in management leadership studies. For this,
I wish to provide the direct research support to my long global experience along with the senior research colleagues of the Fire University. Dr. Kiran Bedi is the source of great inspiration for human society. Her career, which spans over 5 decades, is a full of many exemplary work she did for well-being of the human society. Through my personal observation about her life and continuing work span, she has right blend of governance, administrative and leadership qualities by which the India and global society got benefited and getting benefited. Dr. Kiran Bedi is the first woman to join the official ranks of the Indian Police Service. Her tenure as a police officer is noted for her successful crusade against the women crime, campaign against drug abuse and alcohol consumption. Dr. Bedi is particularly known for her work in the field of prison reform and considered to be a great reformer during her stint as a IG prison. Dr. Bedi introduced several impactful reforms. Her recent work was as the 24th Lieutenant Governor of Puducherry. Dr. Bedi has become the first woman to be appointed the United Nations Civilian Police Advisor. Dr. Kiran Bedi is a PhD from IIT Delhi with a postdoctoral Nehru Fellowship, an author, an Asian tennis champion, recipient of the Ramon Magsaysay Award, Asia's Nobel Peace Award, and President's Police Medal for Gallantry. She has a biopic titled Yes, Madam Sir, made by an Australian. She has founded two foundations, Navjot India Foundation and India Vision Foundation, serving the underprivileged in rural urban areas and prisons. In her latest book, Fearless Governance, she provides her learned perspective on the fundamentals of good governance. It illustrates how a sense of belonging rejuvenates problem solving in the service. This book is a revelation of stark realities for governance. It is based on the ground realities of nearly 5 years of service of Dr. Bedi as a Lieutenant Governor of Puducherry and her vast experience of 40 years in the Indian Police Services. She demonstrated the right practices of responsible governance. She brought about team spirit, collaboration, financial prudence, effective policing, bonding in services, and decision making to fearless leadership. Fearless governance is a book to read, see, hear, and feel for good governance and leadership. It is beautifully illustrated with photographs and graphics. Dr. Bedi throws a few essential nuggets of guidance for the public officials to remain fearless and high performing to provide good governance. Be accessible, create open system by which people can reach you, most certainly if you work in the public service. Be visible, recognizable. People need to see their officers. Do not get pressured to break the rules of to oblige. If you do it once, nothing stops you from repeating it. Find solution, connect with the beneficiaries and listen, innovate and collaborate, form coalitions, keep administration participative. Be ready to move out of your comfort zone, make family your ally. In the words of Ms. Indra Nui, former CEO of Pepsi Company, fearless governance is a blueprint for good and effective governance. The leadership practices cut across public and private sectors. On digital platforms, especially I see her post in LinkedIn every morning, good morning nutrition, the words, sentences, quotes, and activities updates full of inspiration and values based on deep thinking. With this, once again, I thank to Dr. Kiran Bedi ji
for her visit to IFA University Dehradun campus. Jai Hind. Thank you, sir. Fear robs you of your freedom. To make the right choice in life that will bridge the gap between where you are and where you want to be. May we have the video of the fearless and self-reliant lady who always thought what more she could do for others. Video, please. Success is not a skill. Success is called will. When you have a skill, but only when you have the will that you succeed, friends. Otherwise, success eludes you. Skill many people will have, but who will in the end win? That who has the willpower. The will is the main thing, and willpower does not come overnight. It comes by practice. And when you practice all through this age, which you are being caught at the right age, you will be successful in your life. My family in my city and almost in the country was unique. We were 4 of us, not one, and fortunately no boys. We were 4 girls and no boys. And my parents were part of a landed property family. My father defied his own grandfather, almost to the point of disinheritance, because he decided to educate all 4 of us. This is what comes next. I joined the Indian Police Service as a tough woman, a woman with indefatigable stamina because I used to run for my tennis titles, etc. But I joined the Indian Police Service. And then it was a new factor of policing. For me, the policing stood for power to correct, power to prevent, and power to detect. This is something like a new definition ever given in policing in India, but power to prevent. Because normally it was always said power to detect, and that's it, or power to punish. But I decided no, it's a power to prevent because that's what I learned when I was growing up. How do I prevent the 10 and never make it more than 10? So this is how it came into my service, and it was different from the men. I didn't want to make it different from the men, but it was different because this is the way I was different. And I redefined policing concepts in India. Success is not a Inspiration, ma'am. The will is the strong blind man who carries on his shoulders the lame man who can see. May I request the registrar sir to kindly introduce our eminent guest. Well, there is not much that needs to be introduced about her, but I'll just quote from her book. I grew up breaking barriers. I did not follow the crowds. My Indian Police Service provided me with opportunities to innovate. I stood my ground fearlessly when I believed that doing the right thing for the right reasons and for the right cause. This is from our book, The Fearless Governance, which she's going to be talking about today. Giving a little bit of background about her, in fact, you've already maybe got enough idea about what exactly is she about. But coming to her childhood, she was born on June 9, 1949 in Punjab, Amritsar. Dr. Kiran Bedi attended the Sacred Heart School, and in July 1972, she created history by becoming the first Indian Police Service officer. Her interest in tennis made her win the All India Interstate Women's Lawn Tennis Championship in 1976. Known by the name Crane Bedi, that some of you may have already heard about, she got this name for towing Prime Minister Indira Gandhi's car for traffic violations. And she showed the dedication to the service. During her period as the Inspector General of Prisons in Tihar Jail,
she made a fantastic amount of changes to the system that existed in the Tihar system at that time. She won the 1994 Raymond Magsaysay Award, and her last appointment was as the Director General of Police Bureau of the Police Research and Development Center. Her social acts include setting up the Navjyoti India Foundation in 1987. In 1994, she also set up the India Vision Foundation to bring about police reforms. Dr. Bedi won the, she was the 24th Lieutenant Governor of Puducherry, and she has authored a number of books, as you may be already aware about. And today she will be talking about the latest book that she has written, that is A Fearless Governance. We are indeed fortunate to have her amongst us. Thank you. Thank you, sir. I'm still under the influence of excitement and have inflated sense of privilege on sharing the stage with you, ma'am. All of us present over here are eagerly, anxiously waiting for you to address us and share your experience of fearless governance. Ladies and gentlemen, put your hands together. So, प्यारे बच्चों, मैं इसलिए बच्चों कह रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी को भी बच्चों को बच्चा बोलती हूँ. You are my children's age, so very happy to see you youngsters, bright, hungry to learn. आप सब भूखे लग रहे हो, खाना नहीं खाया, breakfast? Breakfast खाया? खाया? No, नहीं खाया. तो खाने के लिए भूख है कि सुनने के लिए भूख है? ओह, तो ये क्यों नहीं बोला पहले? So लग रहा है कि आपके चेहरे पे कुछ भूख है, कुछ समझने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए. मैं कोशिश करूंगी आपकी थोड़ी सी भूख को फुलफिल करने के लिए. तो मैं बहुत खुश हूं आपके बीच में आके. Dr. Karan Singh ji, you're the Vice Chancellor, young and dynamic Vice Chancellor. मैं young Vice Chancellor नहीं देखे. And full of ideas, full of vision, full of plans, quick decision making. थोड़े से 15 मिनट जो मैंने इनके साथ बिताए, इतना कुछ मैंने देख लिया. मुझे बहुत अच्छी. I have had a very good vibration of the very nice to meet you, Dr. Karan Singh. And Brigadier Rajiv Sethi ji, you were a military man, tall and smart and big. You has come so much of energy and discipline, I'm sure, and order in the whole university. Because you must be the tallest out of all of them. With your military experience, academic experience, management experience, administration experience, यही तो चाहिए university को, और क्या चाहिए? Members of the faculty, very happy to meet each one of you. Each one of your faculty is so precious to this university, and I look forward to working together with you through my book team, which I've also brought my expertise. So आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग मिलके अपने अपने एक्सपर्टीज एरियाज में मिलके काम कर सके. जैसे मैं आपको एक्सपर्टीज के बारे में बताऊंगी. मेरी बुक टीम मेरे साथ है. Aditi, can you stand up? She's a nutrition expert. She was the editor of my book. Shivani Arora, she was a researcher and actually assisted in many documentation. And she's herself written a book before I wrote my book.
called Where Kindness Spoke. She's also a journalist by profession. And then I have my younger sister Anu Kushavria, जिसने इस book को नाम दिया. She's a practicing immigration lawyer in Iowa in the US. Fortunately, वो visit कर रही थी. वहाँ बड़ी बर्फ पड़ रही थी. यहाँ बड़ी अच्छा गर्म था. तो ये वो बर्फ को छोड़ के मेरे पास आ गई. But I look forward to her in any way being of value to this university as a part of experience. अब मैंने जब कहा था कि नाम इसने दिया इसलिए क्योंकि पहला original name of the book was Worship in Governance. Worship. क्योंकि my belief was work is worship. तो मैं worship turn करके डॉक्टर चैटर्जी से वर्ड मैंने उधार दिया. डॉक्टर चैटर्जी was the IMM Kozhikode. तो मैंने सोचा मैं वर्कशिप इन गवर्नेंस बोलूंगी. तो जब मैंने इससे बोला अनु आई एम लुकिंग फॉर दिस नेम जस्ट स्ट्राइक एंड हिट समहाउ. मुझे हमेशा एक्सप्लेन करना पड़ेगा वर्कशिप का मतलब क्या है. तो कहती है दीदी वर्कशिप थोड़ी है, इट्स फियरलेस गवर्नेंस. तो इसलिए इसको क्रेडिट जाता है नाम देने का. सो दैट्स व्हाट अनु इज. और मेरे साथ एक और जूनियर है, वो मेरी ऑफिस की टीम है जो कि जिसको कहते हैं ऑल मल्टी डायमेंशनल. कहाँ ये छोटी लड़की ये मेरे साथ राजनिवास में भी काम करे 5 साल और इसे सारी डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखा. सो शी इज माय लिटिल डॉक्यूमेंटर एंड शी इज ऑल राउंड इन द ऑफिस ऑफ my residential and other offices. So this is my little book team. I thought I would come with it. I want to thank Amit Das the most. Amit जी कहाँ हैं? हाँ धन्यवाद आपका. आपकी वजह से किस तरीके से आपने परस्यू किया, आपने कनेक्ट किया. I'm very grateful. I'm here because of you. And I have my extended family also here called Mr. Bakshi and Mrs. Bakshi. मुन्ना मुझे सिर्फ तेरा पेट नहीं याद. That's my extended family. Munna's, what's your real name? Girish. Girish Bakshi's father trained me in Indian police service. I started in 1973-74 and Munna's home in Delhi was my home. His father and his mother actually were parents to me when I started my service in Delhi in 1974. So I'm so happy that Girish and his wife are both part of the architecture, the milieu, the population of Dehradun, because his father then bought a house in Dehradun, and since then, Munna and his wife and his family live here. I miss his mother today, who is very dear to me, who's like a sister to me, who loved me and fed me so well. His father and his mother looked after. So I'm very happy that they also found the time to be part of this event. See how wonderful it becomes. The book team, the extended family, and all of you together makes the event so warm and nice. So thank you once again for giving me this opportunity of bringing us all together. Now, with the limited time before we get into the Q&A में बड़ा कुछ आएगा. मैं आपके लिए 4-5 क्वेश्चन जो मेरे पास वहां बैठे आए उनका जवाब दूंगी. पहला है fearless का मतलब क्या है? fearless की डिक्शनरी मीनिंग बहुत सारी है. आप thesaurus में जाओगे fearless की बहुत सारे मीनिंग्स हैं. What is fearless as far as I'm concerned? Fearless means mature, wise and courageous decision making. It's not foolish decision making. Fearless का ये नहीं मतलब चलो मैं शेर का भाग मैं शेर को पूछ रहा हूँ शेर फिर तू आजा मैं तेरे से ज्यादा भाग. It's not reckless fearlessness. It's very mature, sensible. It's courageous decision making. और उसमें जो decision making है सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं है. स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ है. That is fearlessness. कि उसमें दूसरे का भला भी है. इसलिए आप देखते हैं ना जब चाइल्ड डे वाले दिन इनाम मिलता है बच्चों को और एलिफेंट पे बैठते हैं इंडिया गेट पे. यू नो there's a child award. You know that? बच्चों के अवार्ड है ना. तो वो fearlessness के लिए किसी को ड्राउनिंग में बचाना, किसी को आग से बचाना, किसी को किसी और चीज से बचाना. That's fearlessness. It's called mature, wise, courageous, but also selfless fearlessness. My दूसरा क्वेश्चन which I thought I'll answer with you, मैं ऐसे कोशिश कर रही हूँ आपको बताने के लिए ताकि आप इन चीजों को ले जाओ. मैं एक ऐसे की तरह किसे नहीं बोलना चाहती. मैंने अपने आप से भी आपके लिए सवाल पूछे what is fearlessness? So for me, for you, fearlessness is mature, wise
courageous and selfless decision making. Second is, when does it begin? ये शुरू कब होता है? जब यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हैं, जब शादी हो जाती है, जब एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, कब शुरू होता है? वो आपको मिल गया, आपने, मैंने वाइस चांसलर साहब को बोला कि आपने मेरा काम इजी कर दिया, क्योंकि आपने कहीं एक स्पीड से वो लिफ्ट किया है. It begins when you're small. It continues to grow with you. ये नहीं है कि ग्रो नहीं करता लाइफ, लेकिन इसकी बुनियाद रखी जाती है जब आप छोटे होते हैं. जब छोटे होते हैं, और ये बुनियाद का है जब माँ बाप आपको, टीचर्स आपको प्रोजेक्ट मेकिंग के लिए आपको चैलेंज करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए चैलेंज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, गिरते हैं, उठते हैं. ये छोटी उम्र से शुरू होता है. करेज, जिसको कहते हैं करेज. और करेज करने से आप फियरलेस होने लगते हैं, आप डिसीजन मेकिंग लेने लगते हैं. तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, लड़की और लड़के खेलो, go play, lose, win, go take, because sports is very good sprint decision making. तो आपको courageous decision making देता है, आपको हारना जीतना सिखाता है, friends भी बनाना सिखाता है. So when does it begin? It begins with education. It begins with parents. लड़कियों को बहादुर कैसे बनाया जाएगा? जब लड़कियों को छोड़ा जाएगा, जाओ पढ़ो, खेलो, हाँ, रात से पहले, खराब होने से पहले समय से वापस आ जाओ. लेकिन सेम रूल शुड बॉयज अप्लाई. बॉयज को भी होना चाहिए कि समय से वापस आओ, रात को मिल के खाना खाएंगे. सो लड़कों को जिम्मेदार बनाओ, लड़कियों को बहादुर बनाओ. ये मेरा हमेशा कहा जाता है, जितना हम लड़कियों को बहादुर बनाएंगे गेम्स खेलने से, और लड़कों को जिम्मेदार बनाएंगे, वो तो खिलाड़ी हैं, वो तो खेलते हैं, वो तो आउटडोर करते हैं. So if we do, when does it begin? It begins when you are young, at the age you are in. Decision making, choice of subjects, choice of profession, choice of place of stay, choice of traveling. These are all good decision making, which makes you stronger and more confident. Fearlessness के मतलब confidence होता है, courage होता है कि you confident. और बेटा किताब पढ़ के confidence नहीं आएगा, conceptually आएगा, लेकिन जिंदगी में नहीं उतरेगा जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे और उसमें से एक दुनिया आए. And why is it important in life? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या मर मर के जीना है कि जी कर जीना है? रोज मर मर के जीना है, डर डर के जीना है, घबराहट से जीना है, इंडिसिजन से जीना है, हेल्प मांगते लेना है, हिम्मत से जीना है, अपने अपने खुद मालिक बन के जीना है, अपनी जिम्मेवारी लेके जीना है, और दूसरों की मदद के लिए जीना है. तो दिस इज व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन लाइफ. कैसा जीवन हम व्यतीत करना चाहते हैं? हिम्मत वाला कि डरपोक होगे? डरपोक होगे तो रोज गोली बजेगी रोज, और अगर हिम्मत वाले करोगे तो दो रोज दूसरों को सुरक्षा दोगे, दूसरों को हेल्प दोगे. लास्ट क्वेश्चन जो मुझे आया, हाउ विल इट हेल्प? It will help. It's important in life. It will help you more. It will help you in such a way that it will make you a better human being. It will make you a better self-reliant human being. अगर मैं छोटी उम्र में इंडियन पुलिस सर्विस में ऐसी थोड़ी चली गई थी, यूनिफॉर्म पहनो, एकदम बड़ा मजेदार, रोज ठोकते मुझे लोग, रोज गिराते मुझे, तो मुक्का मारते, लॉ एंड ऑर्डर में मुझे घबरा देते. लेकिन उससे पहले तो मैं एशियन टेनिस चैंपियन थी. Before I joined the Indian Police Service, I was a national champion at the age of 16. I was an Asian tennis champion at the age of 20, and at the age of 22, I became the woman. तो ये ऐसी थोड़ी. फिर कॉलेज में एनसीसी थी, उसमें भी जाती थी, एथलेटिक्स है उसमें भी जाती थी, ड्रामेटिक्स है उसमें भी जाती थी, डेक्लेमेशन है उसमें भी जाती थी, हिम्मत करती रहती थी, हर चीज सीखने की कोशिश करती थी. हर एक्टिविटी जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में होती है, उसका मीनिंग होता है. उसका मीनिंग ये होता है, हर चीज को सीखो और अपने लिए बुके बनाओ. पता नहीं कौन सी चीज आपको क्या सिखा रही है. मैं डेक्लेमेशन में पहली बारी जब डेक्लेमेशन में गई, मुझे भूल गया, लेकिन ये थोड़ी मतलब मैं पहली बारी नहीं गई, मैं फिर गई, फिर कम भूली, तीसरी बारी और कम भूली, चौथी बारी मुझे पेपर भी नहीं देखना पड़ा, आ गया. लेकिन अगर मैं पहली 3 बारी फेल होती नहीं और सीखती नहीं, तो चौथी बार मैं जीतती कैसे? So it was like practicing, and this is time to fail. This is the time to fail and succeed. This is not time to always win. कम मार्क्स आए, फिर से मेहनत करो, घबरा के बैठने की जरूरत नहीं. It will help. This is being fearless and courageous. और इसके साथ अगर एक सीक्रेट लेना आपने fearlessness का, तो वो ये है, स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन के साथ जोड़ो. भगवान से डरना रखो. क्या कर्म करने लगे हैं, ये देखो नैतिक है कि झूठा है, सच्चा है, दूसरे के भले के लिए कि मेरे स्वार्थ के लिए.
इसलिए स्पिरिचुअलिटी जोड़ना बहुत जरूरी है। मैं अमित आपको बताएंगे कि मैं 2 दिन स्वामी राम आश्रम काट किया, कोई 5 स्टार नहीं है, कोई 5 स्टार नहीं है, बड़ी जगह बड़ा सादा खिचड़ी वाला खाना देते हैं डिनर के लिए, लेकिन हम लोग टीम, अपनी सारी टीम स्वामी राम आश्रम को किया है। आपको पता है स्वामी रामा कौन? मालूम? किसी को मालूम तो सिर्फ हाथ खड़ा। स्वामी रामा एक मिनट, जिसको पता है हाथ खड़ा। देखिए ये दुख की बात, ये दुख की बात। अपने संत महात्मा, you know he passed away on only 1996. I wish I had bought a book of his. His book is called Living with Himalayan Masters. आपने स्वामी योगानंद के का नाम सुना? जितनों ने स्वामी योगानंद का नाम सुना है हाथ खड़ा। कितने कम हाथ हैं? May I request your vice chancellor, please add these spiritual books to education. जब तक आप ये नहीं डालोगे, ये सूखे रूखे रहेंगे, इनमें मिठास नहीं आ सकती, इनका दिल आत्मा नहीं जुड़ेगी, नैतिकता नहीं आएगी। So when you read these kind of, and Swami Ashram is in Rishikesh, I've driven from there. So मैं जब आपका कोर्स आया तो मैंने एक्सेप्ट इसीलिए किया कि मैं ये भी काम करूंगी और स्वामी राम आश्रम भी जाऊंगी, तो मेरे 2-in-1 बुक लिखने के बाद मैं दोनों चीजें कर सकती हूँ। तो इसमें मेरे लिए डबली अट्रैक्टिव हुआ। आपने मेरे लिए बहुत अच्छा होटल बुक किया, मैं नहीं उसमें आया, मैं स्वामी आश्रम गई, वहां मैंने आपको बता दिया बेसिक्स था, सिर्फ बेसिक्स, और हम बेसिक्स में रहे। आश्रम में यही तो सिखाते हैं, यही तो आपको कंफर्ट जोन से हटाते हैं, आपको सादगी बताते हैं और नम्रता से रहना सिखाते हैं और भक्ति सिखाते हैं। मैं वहां पर मेडिटेशन किया, मैंने वहां योग किया, मैंने उनके कुछ योग आसन सीखा। योग करते हैं रोज करते हैं, क्लास लगाती है आपकी, तो रोज योगा क्लास लगनी चाहिए, रोज योगा की क्लास लगनी चाहिए। योगा की क्लास के बिना आपका जीवन नहीं है ठीक। तो फियरलेस बनना है ना, तो योगा करना जरूरी है। फियरलेस बनना है ना, तो ऐसी पुस्तकें भी पढ़ना जरूरी है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे कोर्सेज में ये चीजें नहीं है। और जब कैरेक्टर बिल्डिंग आती है, इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग, फियरलेसनेस ऐसी पुस्तकों से आती है। और जब आप ऐसे प्रवचन सुनेंगे, उनके डिस्कोर्स हैं, आज यूट्यूब पे भी है, नहीं भी है, तो और फिर आप में से कितने वॉलंटियर करते हो फियरलेस और बनने का? एक और कितने जने वॉलंटियर करते हो बाहर किसी चीज में? वॉलंटियरिज्म हाथ खड़ा करो। 100% होने चाहिए, 100% किसी त्याग में होने चाहिए, तब जाके आप और हिम्मत ही करके लीडरशिप। तो जब मैं कह रही हूँ लीडरशिप का शब्द, लीडरशिप इन्हीं चीजों से आती है, वॉलंटियरिज्म से आती है, नैतिकता से आती है, आध्यात्मिक त्याग से आती है, मेडिटेशन से आती है, योगा से आती है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से जो मैंने कहा वो आती है। और जाके बाकी जो आपने प्रोफेशनल, देखो ये जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं ना, ये आपका करियर, तो आपको करियर में स्किल दे रही है, लेकिन पर्सनल लाइफ की डेवलपमेंट नहीं दे रही। They are not developing you personally, you will develop, वो आपकी चॉइस है, उसका कोई ध्यान नहीं होता। उसका ध्यान होता है जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, और इंटरव्यू में जब आपके पास सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा होंगी तब आप पास हो जाएंगे, बाकी फेल हो जाएंगे। और सॉफ्ट स्किल्स तब आएंगे जब मैंने आपको जो चीज बोली जो आपके कोर्सेज में नहीं है, वो सेल्फ कोर्स होता है। मेरे स्कूल में योगा कोर्स नहीं था, लेकिन वो मेरे घर का था, मेरी माँ बाप से देनी थी। सो ऐसे ये पुस्तकें रीडिंग, ये मेरे स्कूल का कोर्स, कॉलेज का नहीं था, लेकिन मैं खुद ढूंढती थी कैसी पुस्तकों को, मुझे भूख थी, मैं भूखी थी कि मैं जानूं ज्यादा। आप इसे गीता पढ़ते हो? कभी कोई गीता पढ़ता है? पढ़ो उसको, गीता पढ़ो, ये हमारा ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी शिक्षा है, लेकिन कोर्स में नहीं, मगर ये पर्सनल कोर्स है। सो whoever it does, they makes their own personal course, साथ साथ with the professional, तो फिर क्या होगा? You will develop personally and professionally. But if you don't do that, you will not develop personally, you will develop professionally, but in the interview you will get less marks because ये तुम्हारे पास गहराई में नहीं आएगा आपके पास। समझे मेरी बात? तो ये मैं आपके लिए fearless governance की ये केमिस्ट्री। Okay, so now अब आपकी बारी। Is that right, begin sir, registrar sir? That's time for Q&A. You have a presentation. Okay, quickly see this film
and then we will do Q&A, because that will introduce you to the book, and also some of you may have read it, some of you may not have read it. You आपकी मर्जी, लेकिन जो पढ़ेगा ज्ञान हासिल कर लेगा, जो नहीं पढ़ेगा उतने नंबर इंटरव्यू में कम आएंगे। अब सुनिए इसके बाद। Okay, good. Okay, good. Let's go. ये सुनना जरूरी है, ये बिलीव्स लेने जरूरी है। बिलीव इन, ये मेरे बिलीव्स है। प्रोडक्टिव वर्क में बिलीव करो, पावर ऑफ इमेजिनेशन में बिलीव करो, पावर ऑफ प्रिवेंशन में बिलीव करो, पावर ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग में इंप्रूव करो, सेल्फ पुलिसिंग, ये सारी वही चीजें जो मैंने आपको बताई। ये थोड़ा एकेडमिकली लिख दिया मैंने, लेकिन मैंने आपको साधारण तरीके से बताया। ये बिलीव्स के आधार पर जिंदगी जी जाती है, जो आपके बिलीव्स। अब आप बुक देखें। हाँ, ये मेरी ओथ सेरेमनी थी मई 29 to 16 में। ये क्यों रखी है हमने? इसका वीडियो है कोई? हाँ है नहीं? अच्छा, उस वक्त मैंने जब पीछे जाते हैं, है ना? हाँ, उस दिन मैंने स्पीच दी थी, मैं भी आती हूँ आगे कि वो स्पीच भी कहाँ से शुरू होती है। और लेट्स गो है उसमें एक मिशन, मैंने आपकी भी मिशन स्टेटमेंट पढ़ी यूनिवर्सिटी की। मैंने मिशन स्टेटमेंट उस वक्त एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर टू पॉन्डिचेरी की थी, प्रॉस्परस पुडुचेरी, सबका भला हो, सबकी प्रॉस्पेरिटी हो, जस्ट 2 words, प्रॉस्परस पुडुचेरी। और एक मंत्र दिया था उनको, ट्रस्ट, एम्पावरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, के विश्वास, ये कि अपने आप की चल रहा है, अपने आप को आगे जा रहा है। कौन टेन टर्न कर रहा है स्लाइड? कोई कर रहा है? आपका वो तो ये मंत्र दिया था टी, कि मैं आपको मैं ट्रस्टवर्दी रहूंगी, तुम भी ट्रस्टवर्दी रहना। एम्पावरमेंट, मैं आपको ताकतवर बनाऊंगी, तुम अपने आप को, मैं करूंगी आपको एम्पावर, और मैं जवाबदेही रखूंगी। इट्स अ टीम। I will be trustworthy, I will empower you so that, and how I will empower you, I will show you the way, and accountability. This is all very detailed in the book. Remember, this will be very good from your management, leadership point of view as a career. आगे क्या? हाँ, ये पहला कॉन्सेप्ट है, कॉल द 10 AM मीटिंग। बुक पढ़ोगे तो समझाएगी 10 AM की मीटिंग क्या है। We should start our day coming together. सब जने मिलके सुबह, I'm sure the vice chancellor has his own good practices, but this is what we did, Dr. Singh. There every morning we all started as a group meeting. We sorted out issues for an hour and we were ready for the day. So this is my key team meeting. If you notice, most of them are South Indians. I give you issue of language, but they all help me a lot. And it's a very wonderful team effort. So uske baad we were accessible. The Raj Niwas was accessible. As a leader, fearless governance का मतलब है आप हर एक को सुनने को तैयार हो। मान लो ये लेडी आके मुझे ये कहे, पीछे जाओ। हाँ, मान लो ये लेडी मुझे कहे, मैडम आप तो बड़ी करप्ट हैं, मैडम आप तो हमारी गरीब आदमी को तो सुनते नहीं हो। इसका मतलब फियरलेसनेस है। जब आप सिस्टम को खोलते हो तो आप किसी को भी सुनने को तैयार हो। लेकिन ये दफ्तर खुला, सुबह शाम को रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस वाज ओपन फॉर कॉमन मैन लिसनिंग फॉर एनी ग्रीवेंसेस between 4 to 7 PM, कई बार 8 भी बज जाते हैं। लेकिन आपने देखा है हम लोग 4-4 घंटे खड़े रहते थे, बैठते नहीं, क्योंकि अगर मैं बैठ गई तो वो भी बैठ गए, अगर वो बैठ गए तो हर एक को 15 मिनट लगेंगे। इससे क्या, हर एक को 5 मिनट, और आप सबको सुन सकते हो। These are leadership practices which you can take when you become leaders in your own respects. Next. I think we have a video, is it? next place. First few days of functioning here, the open house went that Raj Niwas is open from Mondays to Wednesdays, 5 PM to 7 PM religiously, for anyone to raise a grievance on a first come first served basis. Each grievance received in open house, as well as from social media, emails, or even WhatsApp, is meticulously recorded and tracked for redressal. We have received so far a total of 31,000 petitions. Next. Mike.
And this slide is for continuously training and uplift. There's another slide. I'll just quickly show you because I want you to interact more with me. So it was constant self-evaluation. Lieutenant Governor's office adopted was self-evaluation and training. Team Raj Nivas initiated a system of self-evaluation and learning for Puducherry officials. Self-evaluation begins with a group breakfast before a subject-based questionnaire followed by SWOT analysis, which is strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The results are also given immediately by a special team of officers. The SWOT has promoted self-development, self-audit, and provides inputs for formulating departmental plans. Officers who participated in self-evaluation SWOT enjoyed improved confidence, enhanced knowledge, and a renewed interest in their work, and reported a feeling of accomplishment. Then we, from the ground, जब open house में कोई शिकायत आती थी, तो we used to go on the ground to see कि problem कितनी गंभीर है. So हम लोग ये नहीं wait करते थे कि इसकी report मांगे. Go and see the problem yourself. That's leadership about. See things for yourself using all your 5 senses, and then volunteer people. These are all officers, senior officers, the collector, the secretary, PWD, all of them. And but we all going not in cars, but in bus, one bus together. See, we going to the problem areas. Water harvesting, खासकर था हमारे को. Check dams, water. ये चीज इंजीनियर है जो मेरे साथ. तो हम लोग ऑफिसर मिलके ऑफर देके फैसले करते हैं. क्योंकि इनको प्रॉब्लम पता नहीं. सारे चीजें सोच के सोल्यूशन ले लेते. तो जो चीजें सालों भर में डिसीजन होती थी, उसी दिन हम लोग एक प्लान बना सकते थे. These were town hall meetings. जब आप fearless होते हो, तो आप लोगों से खुला मिलते हो, कुछ भी सुन सकते हो. That means आपको अपनी कबर्ड में कोई skeletons नहीं हो सकते. ईमानदारी से काम करना होगा और सभी के लिए बराबरी. So youth was collective. These are different regions of Puducherry. Then the monthly reviews. See, town hall meetings, open houses, on the job. Now all secretaries with the chief secretary, everybody, हम लोग monthly review करते थे. जब हम लोग सब जने मिलके review कर कहाँ जा रहे हैं. I'm giving you governance model also, not only management but corporate leadership also. फिर पुलिसिंग के भी हमने ग्रास रूट में कैसे हमने किया. और देखो आप नॉन हायरार्किकल है, ये नहीं कि एलजी है और वो सिपाही है, तो इनमें तो गैप होना चाहिए. कोई गैप नहीं. जब आप सीनियर मोस्ट बन जाते हो, there is no gap. You must become non hierarchical to listen to the people. और मीडिया से घबराओ. अगर आप लीडर हो, जिम्मेवार हो, घबराओ मत. मीडिया अगर आपसे गलती होगी या कुछ होगी, खास साफ कुछ शब्दों में आप उनको बताना आना चाहिए, ना कि वो फेक न्यूज लेके अपनी खबर अपनी मर्जी से बनाए. ऑफ कोर्स आज हमारे पास वेबिनार हो गया. दैट्स द बेस्ट वे टू कंटिन्यू टू बी इन टच. सो synergize use of the social media as you become leaders in your own respects. डॉक्यूमेंट, ये देखो पूजा की शक्ल आपको दिखाई ना, ये सारी उसने बुक्स की डॉक्यूमेंटेशन राजनिवास की मेरी लाइब्रेरी थी, उसमें काम. The most innovative and creative feature of Rajnivas. This creative team is a core group which handles the timely dissemination of information of relevance across various communication platforms, social media, print media, television, publications, and our own dynamic website.
This creative team produces short films and maintains an extensive archive of photographs, videos, and documents, which are a valuable record for the office of the Director. The creative team also ensures Raj Niwas as a pervasive presence across various social media platforms such as the Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, and the WhatsApp. Next, we all have become WhatsApp. The most important communication strategy is a good practice. Team Raj Niwas adopted was a WhatsApp group called Prosperous Puducherry. Team Raj Niwas was quick to grasp the potential. One of the most outstanding communication strategy which Team Raj Niwas adopted was creation of a WhatsApp group called Prosperous Puducherry. You see, the fact is that we were quick to grasp the potential of social media to revolutionize communications within government and the community. Prosperous Puducherry comprises of all officers of all departments, ensuring instant responses to public grievances, often involving several departments. We encouraged all departments also to form similar in-house groups, such as Police Station Group, Women Police Group, Traffic Enforcement Group, Smart Bound, Women in Administration, Teachers Group, Waterage Puducherry, and many more. WhatsApp has promoted coordination within government with vastly better sharing of valuable public information such as press coverage, feedback, and issues requiring urgent attention. This mode of communication cuts across hierarchies, unites us in the purpose of serving the community. At least as important is the speed that it has lent to the government's work. Along with it, made it easy with real-time interface for our public. ये बहुत important है. ये हर ऑफिसर के साथ बारी-बारी में मिलती थी रोज सुबह 9 बजे. Different secretaries, deputy directors, 1-to-1. ये 101 की जो पॉलिसी है, ये आपको मैनेजमेंट की में बहुत काम आएगी, गुड गवर्नेंस में. जिस जगह भी हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप कॉर्पोरेट के लीडर हो, कहीं भी आप खुद अपनी फैक्ट्री के मालिक हो, बारी-बारी एक व्यक्ति को मिलकर बात करो उससे, घर के बारे में पूछो, उसका हालचाल पूछो. It's very, very valuable to work on one-on-one basis. ये देखिए, it's the way I handled with all secretaries और मैं कोई minutes नहीं बना रही इसकी, ताकि उसको अगली बार बोलो तूने मुझे कहा था, मैं उसके बातचीत करूँगा जो फ्रेंड है. So it's making एक तो काम का रिलेशन है ये, एक फ्रेंडशिप का रिलेशन. उसकी फैमिली के बारे में पूछो, उसकी फैमिली में हालचाल क्या है, कोई डिसेबिलिटी वाला चाइल्ड तो नहीं है, कोई इशू प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वायलेंस तो नहीं है, कोई हेल्प, तो आप उसकी हेल्प कर सको एज ए लीडर. द फर्स्ट थिंग ना कोविड के टाइम पर लोग आज वो अपनी कंपनीज में जुड़े हुए हैं जिनके मैनेजर्स ने उनका ध्यान रखा. एम्पैथी. टुडे एम्पैथी इज बीइंग कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीडरशिप. One meetings every weekday. So this is how we make it. While Team Raj Niwas enjoys working hard, we also care, lead, know, and share joy. With more than 14,000 citizens we did in the last 1,000 days. Officers and workers from all sections of the Puducherry community joined in celebrating joy. ये सारे सफाई कर्मचारी Joyous Puducherry. वो पिंक शर्ट में ये सफाई कर्मचारी थे. ये फैमिलीज के साथ था. This is the place of Raj Niwas, remember. ये सब कुछ राज निवास के लॉन्स में हो रहा है. ये गवर्नर्स हाउस इसीलिए होते हैं. और इस बार जब हमने वो ईद मनाई या वो क्या होता है रोजे खोलते हैं, उसमें वेजिटेरियन फूड दिया था, कोई नॉन वेज फूड नहीं दिया था. ये हमारी सारी पब्लिकेशन है, इस बेसिस पे बुक बनी. अगर ये पब्लिश नहीं मैं करती तो मेरे पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती. एवरीथिंग. सो पब्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन. ये है समिंग अप.
जो आपके वाइस चांसलर साहब ने भी बोला, पहले कि अपने आप को एक्सेसिबल बनाओ, दूसरा अपने आप को विजिबल बनाओ, तीसरा है प्रेशर में मत आओ, अपने रूल्स को जानो और सॉल्यूशंस फाइंड करो, ना कि प्रॉब्लम है जी बड़ी प्रॉब्लम है तो क्योंकि प्रॉब्लम है ना इसके साथ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सोच क्या और बी रेडी टू मूव आउट। अगर लाइफ बनना है तो बस पिस्ता बोरिया बोल करके कभी भी रेडी रहो, ट्रैवल करो, ट्रेनिंग में जाओ, एडवेंचर करो, सब कुछ करो, सो गेट आउट ऑफ लिटिल कंफर्ट जोन्स। तो उससे क्या होगा, ये मैंने 5 बड़ी सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन ये पब्लिक एंड प्राइवेट लीडरशिप ऑफिशियल्स के लिए ये 5 क्वालिटीज हैं। ये पेज ऑफ द बुक है, आप देख लेना, मैंने पेज ऑफ बुक तो पढ़ा दी, खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपको वाइस चांसलर साहब आपको सॉफ्ट कॉपी सबको भेज देंगे, जितने स्टूडेंट से सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए और खुद पढ़ लीजिए ताकि आप अपने आप को देख सकें। Vice Chancellor, and I request him to send it to all 4,000 students of all of you. Not only 4,000, you've got so many universities, right? तो सभी को दे दो, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ही देश का भला होगा, उतना ही हम सबका भला होगा। क्योंकि एक एक व्यक्ति जब अच्छा लीडर बनता है, अच्छा कैरेक्टर बनता है, देश का बड़ा भला होता है। Every person is going to be of value with such higher education. ये बुक रिलीज हुई है, आपने देखा है, nobody other than person I admire hugely is Kiran and Professor Devashish Chatterjee. Diamond books. Here's my copy of the book in my iPad. I don't know if you can see it, but I've been reading it again last night. And I must say, I've been absolutely enamored with the book. First of all, it's a very easy read. It's not a laborious book that sort of puts you to sleep. It's written in a language and a style that, sort of bullet points and quickly you can skim through it. Every chapter has lessons, takeaways. I found it very, very engaging. Now, you might wonder why a business executive or a retired business executive should be interested in a book about politics and managing the Union Territory. Let me be honest, I looked at this book as an example of leadership in action. And basically what Kiran is saying is, whether you run a company, or whether you run a Union Territory or a state or a country, there are some universal principles. Work for the people, put them before you, be visible, make sure that you have accountability, make sure that you are resilient, make sure that you're honest. There's some universal principles that Kiran articulates throughout her entire book. And they were more interested in the patronage and getting her out of Puducherry rather than embracing her and saying, what can we learn from her? And because this book provides a beautiful blueprint of decentralized governance given to a very, very honest, ethical, caring leader can actually make a difference. With some of the pictures that I saw, I had tears. The bathrooms, the classrooms, the hospitals, the dental clinic that you showed, Kiran. I cannot imagine that people can look at that and have a good night's sleep and not have their conscience evoked. I mean, I am in a state of shock after seeing some of those pictures. And this is not from 20 years ago, this is last year's year. What is wrong with us? Do we not care about our own citizens? And so I am sincerely hoping that this book by Kiran is a call to action. This is the book that your Q&As. Simply answering, ma'am, I'm sure most of us present over here are eagerly waiting to interact with you. Can we have the questions, please? Can we pass on the mic to sir? We have good time, we are in time and rather ahead of time. So ask relevant questions. Good morning, ma'am. I am Ayush Ranjan from BLLB second year. I am also a transfer of IPS from Sevak Sangh. My question is, what will be your suggestion for those students who want to go in politics and what they can do from their college life for the same? Thank you, ma'am. पॉलिटिक्स में जरूर जाओ, लेकिन जो गलतियां देख रहे हो पॉलिटिक्स में उनको ना अपनाना और अलर्ट रहना, दिख रही है कौन सी गलतियां हो रही, तो यहाँ उनको इंस्पायर करना है तो उसमें चले जाओगे तो सारी उम्र चैन से सो नहीं सको।
कि वो आपको करप्शन सीबीआई सब फॉलो करेंगे कहीं ना कहीं, समझे। और अगर आपने अच्छी क्वालिटीज जहां नजर आती वो ले लो तो फिर उसको तो देश की सख्त जरूरत। सो जरूरत आपकी है, लेकिन कैसे व्यक्ति है, घटिया है तो मत जाना प्लीज, और अगर अच्छे हैं तो अभी जाओ, आपकी जरूरत है, ठीक है। Thank you. A memorable moment as an IPS officer or as a lieutenant governor? एज ए पर्सन जो भी मैंने किया है ये सबसे ज्यादा मेमोरेबल नहीं है। जब आप वर्तमान में जीते हो ना और वो करते हो जो आपको अच्छा लगता है, वो आपके लिए मेमोरेबल बन जाता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। बट दिस इज व्हेन यू मेक अ चॉइस एंड इट इज फॉर लार्जर गुड। मैं यहाँ बुक नहीं बेचने आई, मैं आपको शिक्षित करने आई, आपको अच्छे लीडर बनाने आपको फ्री दे दी। तो इसलिए अगर आप इसमें से कुछ ले जाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, नहीं तो मैं तो खुश हूँ। हाँ जी। Good afternoon, ma'am. कहाँ? हाँ। Good afternoon, ma'am. Thank you for discussing this topic of evidence with us, and I hope that you are having a lovely time. Yes, ma'am. My question to you is, what is the importance of training the youngsters of today with the skill set and mindset of leadership to catalyze a pragmatic shift in the quote-unquote good governance of the contemporary world? Thank you. देखो याद रखो ना, there are 3 educators in your life. First educator is your home, and in the home are all your elders. All elders can be grandparents, uncles, aunties, whoever, and your parents. They are your first educators. Language वही बोलते हो ना जो मम्मी डैडी की है. So they are your first language teachers, and you dress, you go to school, they make decisions, but they are your primary educators. Then your education becomes the school you go to and the education institution you go to. So your teachers, school and your university teachers are your secondary but very vital educators. Right? Now, how you learn from them, how they educate you, what kind of books you read, what kind of courses you do, how well you spend your time, what kind of learning, social networking you're doing, what is learning from you by social interactions, that's a school environment and education. So that's an educator and also experience giver. But the third and the most important educator is you yourself. And if you yourself, suppose yoga नहीं होता रोज, तुमको कौन मना करता है योगा रोज करने में? Suppose वो बुक रीडिंग बुक कोर्स में नहीं है, कौन मना करता है कि आप बुक में पढ़ो? That means you are a self-educator as well. You can't say माँ बाप ने नहीं दिया, पढ़ो ने नहीं बताया, यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, मैंने नहीं किया, तो तुमने क्या किया फिर? तुम किस लिए थे? Right? So take responsibility for what you want. So you are 3 levels for good learning. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Myself, Puducherry from BCA first year. My question is that up to what extent digitalization can be used in governance? Can be used what? What is it? Up to what extent digitalization can be used in governance? हर चीज में ई-गवर्नेंस अब आ सकती है, एवरीथिंग। देखा नहीं 2 साल पढ़ाई कैसे किया आपने? ई-गवर्नेंस ही तो थी, ई-एजुकेशन तो थी, somehow you continue to, और कितनी जबरदस्त कनेक्टिविटी रही गवर्नमेंट स्कीम्स की। अगर ई-गवर्नेंस नहीं होती तो हम भूखे मर जाते। एक 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन, 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन तो भूखे मर जाती। ये सारी ई-गवर्नेंस से बचे हम कैसे? जो ई-ट्रांसफर हुई मनी, हर गरीब के घर में वो डायरेक्ट ट्रांसफर हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मनी, मैंने खुद कराई है। और उस वक्त अगर जनरल अकाउंट्स नहीं होते, ई-गवर्नेंस, और उसमें पैसे सरकार के नहीं जाते, ई-गवर्नेंस, पैसा कैसे मिलता? क्योंकि आप तो सड़क पे थे ही नहीं, कैसे जाते? यू नॉट ऑन द रोड, देयर इज नो पर्सन टू डिलीवर।
So every person, but individual का काम तो अपना था ना, अपने बैंक अकाउंट में तो जा सकता था ना, पैसे तो निकलवा सकता था ना, दुकानें तो खुली थी ना, लॉकडाउन टाइम में कुछ टाइम के लिए खुली थी ना, अगर पैसा नहीं होता बैंक में तो कैसे खाना बना? So e-governance is a very big solution. और उससे क्या हुआ? When the money was being transferred to the poor through Jan Dhan accounts and e-governance money, no leakage was happening, no commission was happening, no contractor was involved. So the money of the government of India earned through national wealth was going directly to the needy and the deserving. E-governance is, I'm giving you one example. As e-governance can be used to reduce corruption, to eliminate delays, to put on record your grievances, right? And e-governance also means face-to-face. You can talk, share, have conferences, educate, ask questions, or look at the e-governance. It's coming through social media tools. आज कोई शिकायत डालो ट्विटर में मुझे ये नहीं हो रहा, झट से डिपार्टमेंट को परेशानी हो जाती है और मेरा नाम आ गया उस फेसबुक में या ये, और झट से जवाब करने की कोशिश करने लगते हैं, बिकॉज ई गवर्नेंस इज प्रोवाइडेड एक्सपोजर। पहले मुझे एक जन पोर्टल है जहां जनरल मार्केटिंग गवर्नमेंट की जन पोर्टल, अब कोई हम लोग सरकारी सामान खरीद नहीं सकते, ओपन जन पे जाओ, डालो क्या चाहिए, सड़क बनवानी है तो आप उस पे आएंगे, आपको बिट्स में आपको उस हर एक, दैट मींस यू आर पुटिंग एवरीबॉडी नाउ इक्वल। आप यूज ना करें तो आपकी मर्जी, लेकिन ऐसी सिचुएशंस हैं जहां अनिवार्य है कि आपको अब जेल पोर्टल पे जाके अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है, पेमेंट्स डिलीवर करनी है, ई पेमेंट्स डिलीवर करनी है, क्योंकि आगे पहले तो इसके बिना आधा पैसा पहुंचता ही नहीं था अपने अकाउंट में। आपकी जीएसटी क्यों बढ़ रही है? इट्स बिकॉज ऑफ ई गवर्नेंस। और जीएसटी बढ़ने से क्या हो रहा है? यू हैव मोर मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे। अगर ये नहीं होता तो मनी बचती नहीं है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और जितना हम अच्छी क्वालिटी ई गवर्नेंस जाते हैं उतनी करप्शन कम होती जाएगी, गवर्नमेंट की मनी स्ट्रेट में अकाउंट्स में जाने लग जाएगी, मनी पता चलने लगेगा कितना अकाउंट है, किसने कहां खर्चा। तो ई गवर्नेंस इज वेरी वाइटल। आप में से सब जने प्रॉपर्ली आईटी ट्रेन होके जाना, आईटी सब्जेक्ट हो या ना हो, you must be fully trained in the use of information technology if you have to have a future in your profession. Okay. Ma'am, the way you explained the importance of servant leadership, really like it. My question is, ma'am, how to effectuate? क्योंकि हर किसी के अंदर कभी ना कभी एक वीआईपी कल्चर आ जाता है, हम सोसाइटी में देखते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि लोगों के अंदर वो बॉसिज्म की टेंडेंसी आ जाती है। आपका क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर्वेंट लीडरशिप को कैसे हम रियलाइज करें इंस्टीट्यूशंस में, कॉर्पोरेट्स में और हर जगह? बता तो दिए, दोबारा पढ़ना किताब देखिए, ये 5 पॉइंट्स दिए एंड, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आई एम स्टूडेंट और टीचर? हाँ, लगा। You should be the first one to read the book and teach the book. Sure. Then you'll get the answers. अब ये क्वेश्चन का आंसर you will give in the classes, not me. All right? आपके सीनियर कौन है? मोनिका मैडम। Now आप जरा देखना ये पढ़ाते कैसे क्लास में। You are the right person to be asking this question and getting the answer, because when you get the answer, then you will be able to teach. Yes. अगर मैं आपको पढ़ा दूं तो आप कैसे पढ़ाएंगे? तो मैंने कहा पढ़ो और पढ़ाओ। Sure. Good morning, ma'am. He wants to ask. Can we get the mic, please? Yes. Good morning, ma'am. Ma'am, my name is Kiran. Okay, after you, the mic comes up. Okay, go ahead. My name is Kiran. I am pursuing BTech, currently in my fourth semester. Ma'am, my question to you is that what are the challenges and opportunities and individual cases in governance? Opposition. Opportunities. Opportunities. And challenges. Opportunities are immense. Government has the power to deliver. आप मुझे बता दीजिए जूनियर इंजीनियर की पावर्स क्या है? कितनी इमेंस पावर्स हैं?
उसके पास सारी प्रोजेक्ट्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी उसके पास है, कॉन्ट्रैक्टर को चुनना भी वो टीम का मेंबर है, पावर्स है, यूज करें या अब्यूज करें। एवरी पावर हैज अ फ्लिप पॉइंट, ही कैन यूज इट एंड अब्यूज इट, राइट? उसके पास पावर है, सुपरवाइजर वो है, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, chief engineer, all of them are huge powers. They have financial powers, they have executive powers, they have selection powers. Problem होती है जब वो खुशामद करने लगता है, काम से हट जाते हैं, काम को ईमानदारी से नहीं करते, खुशामद में चले गए, यहाँ कॉम्प्रोमाइज करते, यहाँ सुपरविजन नहीं करते, यहाँ भागीदारी करते हैं, तो कहाँ सैक्रिफाइस होती है? पब्लिक। लेकिन अगर वो डट के रहता है और उसका सीनियर अच्छा है तो वो काम हो जाता है, लेकिन अगर सीनियर को कुछ चाहिए उसमें से वो कुर्बान होता है। लेकिन उसके पास चॉइस क्या है? उसमें शामिल हो जाए, फैसिलिटेट करे, या वो क्या करे? आई थिंक दैट्स द रियल चैलेंज, कि वो काम अच्छी तरह कैसे करे अगर उसके पास सीनियर सुपरविजन कायदे की नहीं है। आई थिंक दैट इज द रियल चैलेंज इन दिस सिटी गवर्नेंस टुडे। लेकिन चैलेंज प्रॉब्लम है कि अगर वो ही गड़बड़ हो गया तो ऊपर तक वो गड़बड़ी दिखाएगा, तो सीनियर को अगर मौके पर नहीं जा रहा तो सीनियर को पता ही नहीं चल रहा कि क्या प्रॉब्लम हो रही, यहाँ वो भी शामिल हो गया, उसको सूट करता है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक उसमें पॉलिटिशियन भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, वो फिर सारे शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सरकार सड़क टूटी हुई होती है। यहाँ सड़क तो बन गई लेकिन 2 साल बाद खराब, क्योंकि उसमें वो नहीं गया जिसकी पेमेंट करी। और क्या किसका कसूर है? क्या उस जूनियर इंजीनियर का फर्ज नहीं बनता था रोज जाके देखना कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया है या जो कमिटमेंट किया वो जाए? वो जाता ही नहीं मौके पर, वो भी नहीं जाता, सीनियर भी नहीं जाता, तो वो अपनी मर्जी कर वो फर्जी बिल फाइनलाइज कर जाता है। पावर है उसके पास बताने के लिए कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं करता। लेकिन पावर है, पावर को इस्तेमाल नहीं करता। तो प्रॉब्लम ये है, चैलेंज ये है आपको कि अगर आप सरकारी ऑफिस में चले गए, आपको ऊपर से सपोर्ट नहीं मिल रही, तो अब आप क्या करें? आई थिंक दैट्स द चैलेंज before the governance today. How do you get good supervisors? And how do you self-supervise? Also, how do you supervise work in such a way that private contractor ना आपको खा ले, क्योंकि उसका नेक्सस होता है वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ, वो मैनेज करता है ऊपर से आपको हटाने के लिए, आपको हटवाने के लिए। तो क्या करें अगर आप हटवाए, आपकी ट्रांसफर हो जाए? होगी, चलो तो तैयार रहिए। कंफर्ट जोन का मैंने लास्ट बोला ना, अपनी कंफर्ट जोन के हटने से तैयार हो जाइए, फिर जाके सिफारिश मत करिए, सर मैं तो सब कुछ काम ठीक कर रहा था, सर अब आप जो कहेंगे मैं करूंगा, सर आप मेरी भर्ती मत करिए, मेरी मम्मी डैडी यहाँ को सॉरी मेरी बेटी पढ़ रही स्कूल में, तो आप कॉम्प्रोमाइज शुरू कर दो। चैलेंज ये आप तो ट्रांसफर के लिए तैयार रहिए। कितने लोगों को ट्रांसफर ही करते जाएंगे, करते जाओ, लेकिन तुम तो नहीं बिके ना, तुमने तो अपनी कॉन्शियस को नहीं बिकाया ना, तुमने तो देश को का नुकसान नहीं किया ना, तो कितने करेंगे? पढ़े तो सभी है ऐसी यूनिवर्सिटी में, लेकिन कितने ईमानदार प्रोफेशनल मिलते हैं आज हमको? कितने? किसको कैसे करो? बहुत ईमानदार कितने? हो सकता है, अब नहीं हो सकता, होगा नहीं होगा जानकर नहीं, लेकिन जो मैंने देखा है कि जो व्यक्ति मौके पर जाता है, काम मेहनत से करता है, उसका काम लोग बोलते हैं कि उसने करवाया था, उसके टाइम पर ही हुआ था, बहुत नेक इंसान था, लेकिन वो एक ही था। मगर आप याद रखना, सारे ग्रेजुएट्स हो, भारत सरकार में सारे पब्लिक सर्विस ग्रेजुएट हैं, आज पढ़े हैं सारी यूनिवर्सिटी से ही, सबको ऐसे अच्छे अच्छे प्रोफेसर मिले हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? सारे एक जैसी बन गए, सुपरवाइजर भी वही, वो भी जिसकी वजह से अगर बजट करोड़ रुपए का है, एक 10,000 करोड़ का, सब पब्लिक को मिलता है सिर्फ 200, बाकी कहाँ गया? सब ग्रेजुएट्स, ये ग्रेजुएट्स। सो व्हाट काइंड ऑफ ग्रेजुएट्स आर वी प्रोड्यूसिंग? फियरलेस और कावर्ड्स। क्या हम डरपोक पैदा कर रहे हैं या बहादुर पैदा कर रहे हैं? बेईमान पैदा कर रहे हैं, ईमानदार पैदा कर रहे हैं? काबिल कर रहे हैं कि बेकाबिल कर रहे हैं, या अनएम्प्लॉयबल कर रहे हैं? उसको स्किल नहीं आती, उसको ट्रेनिंग नहीं ली। बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा, ये है चैलेंज आपका, ये इंडिविजुअल चैलेंज है, डिपार्टमेंटल चैलेंज है, लेकिन ये इंडिविजुअल चैलेंज है। सबसे पहले इंडिविजुअल चैलेंज है कि आप अपनी तनख्वाह में रहने को तैयार हो कि नहीं, और आपको इनका बड़ी जल्दी मेरा मकान बन जाए, मेरी बड़ी जल्दी मुझे गाड़ी मिल जाए,
मेरी बड़ी जल्दी है कि मेरा ये पैसा इन्वेस्ट हो जाए, बड़ी जल्दी है आपको। हर ग्रेजुएट इसको बहुत इम्पेशंस है कि मुझे ये सब कुछ चाहिए, नहीं तो मेरा नाम नहीं होगा और मेरी शादी अच्छे घर नहीं होगी। प्रॉब्लम आज ये है, असली चैलेंज को आपने पूछा नहीं। तो ये है इंडिविजुअल चैलेंज। अगर इस पढ़ाई करने के बाद अगर आपने देश की नक्शा नहीं बदला तो ये पढ़ाई फेलियर है। सिर्फ आपको नौकरी दे दी है लेकिन लीडर नहीं बनाया है। आपने पूछा था ना, ये लीडर नहीं बनाया जो लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप मीन्स डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप मीन्स सुपरविजन, लीडरशिप मीन्स टीम वर्क, लीडरशिप मीन्स पीपल सेट फर्स्ट। इंदिरा नूरी का देखा ना, जहां पीपल आर फर्स्ट। तो आप घबराओ, आपको अपने में हिम्मत रखनी है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरी बदली यहाँ से फलानी जगह कर देंगे। फैमिली को क्लियरली पता होना चाहिए मैं बेकाऊ नहीं हूँ, मैं जाने को तैयार हूँ। मोटे मोटे फर्नीचर मत खरीदो, उठाना पड़ेगा। हल्का रखो अपने आप को, जहाँ एक गाड़ी पर ही सामान आ जाए। लेकिन समाज में क्या कहेंगे, एसएचओ नहीं लगा, समाज कहेगा एसएचओ नहीं लगा। सारे एसएचओ लगते हैं क्या? क्योंकि सब जाने कहते हैं हवलदार बन या एसएचओ बन, दूसरा ने बन। तो हवलदार का भी मतलब कुछ, एसएचओ का भी मतलब है। कहा जाता है ये परसेप्शंस है, इनको चेंज करेंगे आप। द वे यू एजुकेट योरसेल्फ नाउ। कैरेक्टर बिल्डिंग, इसीलिए कहा है कैरेक्टर बिल्डिंग का समय बहुत जल्दी से हाथ से जा रहा है। एक्चुअली आप लोगों का कैरेक्टर बन चुका है। मैं कम से कम 10 साल लेट आई हूँ। 10 साल पहले बात होनी चाहिए, 6 साल पहले, 8 साल पहले। वी आर ऑलरेडी लेट। अब अपने आप को रीवायर कैसे करोगे? रीवायर ही है ना, और रीवायर क्योंकि मम्मी डैडी नहीं मानेंगे, आने वाली बहू नहीं तुम्हारी सॉरी बीवी नहीं मानेगी, वो नहीं मानेगी। वो तो देखेगी ऊपर की कमाई कितनी है। हाँ ये बहुत बढ़िया, ऊपर की कमाई की मलाई है, मलाई। तो बोल दे मैं तो स्किन मिल्क पीने वाला हूँ, मलाई वाला नहीं। सो दीज आर योर रियल चैलेंजेस। ये आपको जिंदगी भर, जितने भी सुन रहे हो, जिंदगी भर आपको याद रखना है कि ये जो देश ने आपको शिक्षा दी है या आपने शिक्षा दी है, आपको कहीं ना कहीं आपने देश को क्या, आप क्या देंगे देश को, और आपकी ईमानदारी के आधार पर ही देश की प्रगति होगी। क्योंकि आप ईमानदार, पब्लिक मनी से दूसरा भी ईमानदार, देश को फायदा। तुम ईमानदार, दूसरा करप्ट, वो आपको भी नुकसान कर रहे हैं, आपको भी नुकसान कर रहे हैं। लेकिन कम से कम तुम उसका बढ़ा तो नहीं रहे ना, तुम उसका बजट बढ़ा तो नहीं रहे, कम से कम उतना तो कम कर दिया। वो कर रहा है तो मैं क्या करूं जी, मैडम उसने तो नुकसान कर दिया, तुम उसके जिम्मेवार नहीं, तुम सिर्फ अपनी जिम्मेवारी लो। लेकिन इसके सॉल्यूशंस ऊपर की लीडरशिप पर, ऊपर की लीडरशिप। इसीलिए मैं चाहती हूँ म्युनिसिपल कमिश्नर सड़क पे चले। दिस इज व्हाट आई सेड, फील्ड वर्क। म्युनिसिपल कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, junior engineering, superintending engineers, chief engineers, DGPs, they should all walk the street every day। मैं हमेशा कहती हूँ शुरू दफ्तर से मत करो अपना काम, शुरू करो फील्ड से। सुबह 9 बजे सीधा दफ्तर मत आओ, सुबह सीधा इलाके में जाओ, सड़क पे जाओ, जाके तमाशे देखो। मैं इतनी सड़क आपके पास ड्राइव करके आ रही, मुझे बड़ा दुख हुआ देख के हाल देख के बहुत दुख हुआ। आधी स्ट्रीट तो सारी इंक्रोच है आपके पास, सड़क में जाम है, लेकिन हर एक दुकानदार ने कम से छोटी दुकान बड़ी दुकान बार बनाया। तो सड़क तो छोड़ी नहीं, तो इंक्रोचमेंट कौन क्लियर करे? और इतने सड़क में गड्ढे, कोई जूनियर इंजीनियर पढ़ाई करके नहीं गया, तो गड्ढे बने, क्यों नहीं गड्ढे भरते आप? और क्यों नहीं गड्ढा भर के वो गड्ढा भरा रहता है? ये सारा हमारी करतूतें हैं। लेकिन पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे हैं, जाओ जाके डिपार्टमेंट देखो, एमटेक बीटेक सब कर चुके, एम करके एमबीए भी कर चुके, बड़ी बड़ी पढ़ाई कर चुके हैं, इंडिविजुअली क्वालिफाइड है। लेकिन कलेक्टिवली वो नेशनल सर्विस में बहुत कम लोग हैं जिनके आधार पर आज अभी भी देश चल रहा है। तो ई गवर्नेंस होना, लेकिन ई गवर्नेंस पार्शियल सोल्यूशन है। कुछ चीजें तो आंखों के सड़क पे चलना पड़ेगा ना, कंप्यूटर थोड़ी चलेगा वहां। सो ये है मैसेज आपके लिए लार्जर। अपने आप को जिंदगी भर क्वेश्चन पूछना, अगर सरकारी लोग प्राइवेट में करके देखो, झट से नौकरी से निकाल देंगे। सरकारी में पढ़ते रहते हो, छिपते रहते हो, हटाते रहते हो, मैनेज करते रहते हो और नुकसान करते रहते हो देश का। आप एक चैप्टर पढ़ना बुक का,
जब आपको ई बुक मिल जाएगी, स्ट्रेट वे गो टू द वाटर रिच पुडुचेरी। कैसे हमने पौंडीचेरी को पानी दिलाया, कोई सरकार में पैसा नहीं था, उसका कैसे क्यों नहीं था वो लिखा जाता है। और वो उसमें उसके बाद हमने पौंडीचेरी को सूखा होते हुए से हमने वाटर रिच कैसे बनाया, पढ़ना चाहती हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। इट्स अ लार्जर मैसेज टू माय यंग बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, Madam, good afternoon to you. I am Captain Rajesh, also a Navy veteran and a research scholar here. I'd like to call your attention to point number 5 in your major slide on self-policing. Very basic things, helmets, not wearing, seatbelts, not wearing. Tell them, they'll argue. Here I mean my uniform, your uniform, anybody's uniform. I also please raise your question. How can this be addressed? I've already answered. Self-policing. I've already answered. This is self-policing about? Captain, I've already answered. This is self-policing. Self-policing means you do the right thing. Don't only police others. You police others, but पहले ये नहीं देखो कि वो तो चोरी कर रहा, मैं भी चोरी कर लूं, वो नहीं कर रहा मैं. No, you self-police. You be honest. You serve what is your duty to do, right? Don't wait for others to do. You just do your duty. वो करे पहले आप. No, पहले आप नहीं. पहले मैं, not पहले आप, पहले मैं. कहते ना पहले आप, वो एक फंक्शन हो सकता है पहले आप, लेकिन कर्तव्य में नहीं पहले आप. शादी में पान खाने में पहले आप, लेकिन not on duty and responsibility पहले आप. That is पहले मैं. Alright, self-policing. Thank you. Can we have a next question? Any other question? Problem, ma'am, the question is little political, and because you are the CM candidate and Lieutenant Governor of Puducherry. I mean, Delhi and Puducherry, Uti like Delhi and Puducherry, there is a conflict between Lieutenant Governor and CM. Now, how do we overcome this problem to better development of that unit? There is a conflict. And there is a conflict between Union territory like Delhi and Puducherry between CM and Lieutenant Governor. And how do we overcome? There is no conflict if they all read the law properly. There is no conflict. There are 3 chapters in this book, how I dealt with the conflict. And there are also another small 2-page chapter, 2 pages only, what the court said. Because if a particular, let's say, Lieutenant Governor of Puducherry, Chief Minister, one of them refuses to understand the law and implement the law in their way because it suits them. There's a first chapter, second, third, fourth chapter in the book called My First Dinner with the Cabinet. तो पढ़ना, उस डिनर में अब कैबिनेट वाले ने जैसा मैं चार्ज लिया और उन्होंने कहा मैडम फॉर्मेलिटी है कि वो डिनर होता है कैबिनेट के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, सारे जने टैमिल बोलते थे, थोड़ी सी नहीं इंग्लिश बोलते, मुझे टैमिल नहीं आता. मैंने अपने सेक्रेटरी को बोला मेरे साथ चलना, क्योंकि वो नहीं कहता मैडम पता नहीं उन्होंने आपके साथ 1-to-1 बात करनी है, सो ड्रॉप मी आउट, मैं तो इंटरेस्टेड पार्टी हूँ इनका, उन्हीं में से ग्रो किया हुआ है, यू गो. सो 2-3 जने थोड़ी इंग्लिश बोलते, तो डिनर पे वो आ गए, 7 जने मिनिस्टर्स और मैं, और डिनर पे वो आए और थोड़ी सी बात करने लगे, पता नहीं करेंगे क्या बात. एक तो महिला होते हुए भी दूरी होती है ना, भाईचारा नहीं हो सकता मेरे साथ, ना भाईचारा हो सकता कुछ भी. It's all professional. It's neither sisterhood nor brotherhood in this. But brotherhood बन जाता है if there's a man. I noticed it. But sisterhood नहीं बनता. उसके बाद they did not know. Then they one of them said, sir, वो जो इंग्लिश थोड़ी सी जानते थे, कहता तो चैप्टर में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बना के नहीं करेगा. क्या मैडम, we will be sending you some files now for appointments. We'll be sending you certain files for appointments. We'll be sending you certain files for appointments. Please approve them. So मैंने अभी थोड़े दिन ही हफ्ते हुए थे, मैं रूल्स पढ़ रही थी, रूल्स में बिल्कुल क्लियर था. Service matters are with the Lieutenant Governor. Financial service matters, contractors, all these approved planning
all had to be approved by the Lieutenant Governor. It was in the business rules, in the Union Territory Act. ये मैं पढ़ चुकी हूँ. अब appointments के लिए approve कर देना. सिर्फ क्यों? क्योंकि मेरे पास power थी. That means you are accepting the power मेरे पास. तो approve कर देना. मैंने कहा जरूर. Send the files. I will examine them, see them, and send you the my files. Then एक जने ने कहा, oh rubber stamp. मतलब what do you say rubber stamp? Rubber stamp का मतलब क्या? Oh they said no madam it's a slip of the tongue. Means वो कहते थे पहले वाले rubber stamp लगा चुके थे. आप भी rubber stamp लगाना ना. आप भी छाप बनाना ना. फाइल भेजेंगे आप सिग्नेचर करके दे देना. तो जब मैंने पकड़ लिया वर्ड उनसे तो वो माफी मांग लेते. They felt very apologetic कि वो भी सब को इंग्लिश पूरी आती नहीं. रबर स्टैम्प का वर्ड इंग्लिश आता था वो मुंह से निकल गया. तो मैंने उनको छोड़ा नहीं उसको. तो उस पर तो इसलिए चैप्टर में लिखा हुआ. उसके बाद क्या हुआ मैंने देखा इनके बाद कुछ है नहीं खाने की बोलने की. मैंने पेरेंट को बुलाया हाउसकीपिंग को खाना सर्व कर. हम खाने की कोई चल जैसे उन्होंने खाना खाया मैंने कभी देखा नहीं ऐसे लोगों को. उंगल तक चाट रहे थे. This is the people we work with. Rules को violation के लिए चाह रहे हैं. And no matters of breed क्या fish थोड़ी और होनी चाहिए. Fish खत्म हो. You have to deal with these people. Why don't they read the rules? The Lieutenant Governor they could have said, "Madam, please we look forward to that." They could have if there was a difference of opinion, please call us. I say yes, I'll call you if there's a difference of opinion. But yeah, madam, please approve. Now that new government has been formed, so powers में कोई problem नहीं है. समझने में problem, implementation में problem, suitability में problem. मैं इसलिए वहां कामयाब हो गई क्योंकि मैं rules को follow कर रही थी, laws को follow कर रही थी और जहां उन्होंने तोड़ा हमने उसको question किया कोर्ट से. क्योंकि मैं अगर एक्सेप्ट कर लेती तो मैं तो परमानेंट नहीं हो जाती. मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो मेरा सक्सेसर फिर उसी चीज में बाउंड हो जाता. I had to challenge because I am a representative of the President of India. Then, if I concede, then I am conceding from my successor. So we challenged to the Supreme Court every time, and that made my work very tough. Because एक तरफ सारा काम और एक तरफ कचहरी में जाकर तो पहले दिन ही थोड़ी जवाब मिलता है. और लॉ बड़ा एक्सपेंसिव है. मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर्स को हमको एंगेज करना पड़ा. फिर उनको ब्रीफ करना हुआ. इतने थोपे पेपर्स फोटोकॉपी करना, टाइप करना, ट्रांसलेट करना. इट्स नॉट an ordinary job to go and appeal to the Supreme Court and brief and then travel all the time from Puducherry to Delhi to Supreme Court and High Courts. It was very tough. Read those chapters how we managed it. But एक दिन आया जब उन्होंने इनमें से लोकल एमएलए ने कहा कि क्यों चैलेंज करती रहे हो तुम हमेशा एलजी को कानून में. हमारे लिए कुछ होगा ही नहीं. तुम कुछ कमी छोड़ी नहीं. सारे चीजें साफ हो गई. कौन सी पावर किधर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की छाप लगी. समझे? सो दीज आर वेरी चैलेंजिंग लॉज में कोई प्रॉब्लम नहीं. सिर्फ आप कंसीड करते हैं, अनदेखा करते हैं, कनाइव कर लेते हैं. मान लीजिए एलजी और सीएमए जैसे हो जाते हैं तो मंजूर है, सब कुछ मंजूर है. एक चैप्टर इस बुक में चीफ सेक्रेटरी का जो उधर रह गया था, वो रह गया था उधर कानून में अपने तरीके से, उसको मुझे हटवाना पड़ा. यू आर ब्यूरोक्रेट, यू आर एन इंडिपेंडेंट सिविल सर्वेंट, फॉलो द लॉज एंड रूल्स. वो मुझे फाइल ही नहीं भेजता. पता ही ना चले कि डिसीजन क्या, अपने आप डिसीजन नहीं जा रहा. जब हाथ में मेरे पास फाइल आई तब मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बताया कि ये चीफ सेक्रेटरी इज नॉट द राइट चीफ सेक्रेटरी. Move him out. He was moved out. And there's a chapter on this book called the saboteur. Chief Secretary, the saboteur. So these are the challenges of administration, which if you read, it will help you see how the fight was. But it was a fight. Otherwise, मेरे लिए बड़ा खुशी था. राजनिवास है, रोज बजे से खाओ, 6 बेरे आपके पास घूम रहे हैं. मौज करो और टूरिंग करो, टूरिज्म करो. मुझे टूरिज्म देखा ही नहीं. मैंने टूरिज्म देखा ही, मुझे समय नहीं मिला. मैंने सारी हर गंदी लेन को देखा, हर गंदी ड्रेन को देखा, हर गंदा नाला देखा, हर गंदा कुआं देखा ताकि साफ कराने. गांव में जाके पूछने की प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या दूर करने. तो इट वाज टूरिज्म नहीं है.
It was work and responsibility. और naturally वो था ऐसा जब काम करते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती, परेशानी होती, लेकिन आप वो उनको परेशानी आपके काम से तो आप काम थोड़ी बदल देंगे, आप अपना काम डट के करेंगे, जितनी देर है, अगर ना किया होता तो आज मैं आपके पास आती, आज आपकी बुक बनती, सवाल नहीं होता। तो आपकी चॉइस है कैसा जीवन जीना। ओके, okay, any other? We'll take the last question. Go ahead. Come here. Okay. The vice chancellor says take one question. Where is the voice? Come on here. Yeah, go ahead. Go ahead, young lady. Come on here. Right side of the stage. And left side of the stage. Here. Okay, go ahead. It's a great pleasure to have you here. So my question is, now you are here posted in Puducherry. So the language spoken in Puducherry is different. So how did you cope with the communication gap there? By the help of my team. My team was a wonderful team, and they were always by my side. My ADC was by my side, fortunately. My personal secretary was by my side, and they could read my mind beautifully. तो जो मैं इंग्लिश में बोलती थी वो समझ जाते थे, तो कई बार मैं थोड़ा बोलती थी वो ज्यादा बोलते थे, तो मैंने कहा अच्छा तो मेरा माइंड पढ़ रहा है क्या, तो मैं कितनी देर आपसे साथ घूमते हो गया पता चल गया तो आप चाहते क्या करना। So over a period the team became an extension of my own mind. So this is what interpreting was. But then they could use some broken words, but I could start over a period. थोड़े words में समझ करने लग गई थी, वो सोचते थे मैं नहीं समझ रही, मैं समझ रही थी, और ये भी देखना था कि मेरा ट्रांसलेटर मुझे ठीक से बता रहा है कि नहीं। So but it worked through a team. तो टीम के थ्रू काम हो सकता है ऐसी बात नहीं। Okay, thank you for answering. Okay, we move on to the next section. Wait. Let me be the moderator and let me moderate. Okay? Fine. We can have this interaction. We can continue. We can go till infinity. So that was my request for the last question. Just for now. Maybe. That was the last question, and too much things are there, it will be taken care of. Thank you, sir. Thank you. We have amongst us Mr. Kiran Puducherry, National Head IGIG IPS. I invite him to join the dignitaries. And request our honorable chief guest, along with other dignitaries, to kindly unveil the vision document 2022 of the IPS University, Dehradun. काम करता है हम माइक कौन सा वाला चाहिए ये vision of document what vision of respect for thing is May I request Vice Chancellor and Registrar to present a token of gratitude to Dr. Kiran Bedi. Thank you, sir. May I request Honorable Registrar to present a note of thanks. Ladies and gentlemen. yes sir actually on is it on Okay, ladies and gentlemen, it's my responsibility to
present a vote of thanks. But more than that, I guess your strength of the students who are standing also actually indicates the kind of popularity that Dr. Kiran Bedi enjoys. And she has actually delivered to you what really was something that will make a lot of difference to your lives in case you follow what she has been saying. So our first thank goes to her for having come down here and delivered a scintillating talk to you all. Give her a big hand. I also take this opportunity also to thank the team that has come along with her. I'm sorry I may not be able to recall the names, but they have followed and they have been part of our team who has helped in making this firstly her visit here a success, and secondly of the book that she has published, that is The Fearless Governance. A big thank to you all. The Vice Chancellor, actually the whole story how it started was that the Vice Chancellor was reading your book and Mr. Amit Das landed up there, and that's how the whole conversation started. So about inviting you. So a big thanks to the Vice Chancellor and Mr. Amit Das for having initiated the whole thing. And like any program, for it to become successful also requires people who are we have Dr. Amit Joshi, who has done the Master of Ceremony. We have Dr. Mridangshi and the students who participated in the, let's say, in the national anthem. A big thanks to you all for having participated. The background team, the people who are there for providing the IT support as well as the communication support, thanks to them also. Finally, I think you must clap for yourself for having come here and enjoyed this big talk. May I request all to stand and remain standing till all the delegates have left the auditorium. आपके बारे में कहाँ से करूँ? बंद